Oh, Barun! If a woman has a child and is a part of the family and has to work for a living, there is no way a man can even compete. The same family, I'm saying, the man can compete with the amount of what the woman does. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक एक्टर है, वो एक्टर कुछ भी कर सकता है, तभी तो वो एक्टर है। आप उसको क्यों नहीं, ये गांव का तो गांव, दो छोटे शहर का छोटे, नहीं यार, वो कुछ भी कर सकता है। I think first when I saw the trailer, right? So for me, I'm like, oh my God, this is gonna be like, you know, so much action, emotion, drama, and everything that we want to entertain ourselves. It looks like the series is promising all of that and much more. What kind of feedback that you guys are getting? And now that the first glimpse of the show is out, what is the frame of mind now? You know, Arundhati, I'm going to take this first, okay, guys? Because, you know, I put up the first thing I put up was a motion poster, and everyone really liked it. And then the next one was the teaser of the show Jaanbaaz. And you're like you rightfully said, like action-packed and drama and emotion, and everything is high-flying. But the first few comments I get from people on Instagram is, "Oh, Barun! Oh, oh my God, Barun! It's so good!" and they've tagged him, and you know, I was so happy to see him because it was so exciting because we put this entire thing together, and it's so nice to see this. So I think that is also an added thing, and I'm not saying this just for the heck of it. It really has happened. So I mean, I'll keep talking about this Barun a lot. Yeah, sure, no problem. Yeah. So and apart from that, this show is your cop drama, right? Like we have seen a cop drama umpteen number of times. And I feel like what we have done with this is we have tried to really show what the balance between personal life and work life is for a female police officer. Chandan, I would like to come to you because you know यहाँ पे like जो अभी तक जो पता चल रहा है वो ये है कि आप like you are cracking some information through like you know hacking and stuff. Yes. Tell me, is there anything that आपको पता चला through the filming of the series जो अभी actual में you can use in the real life to hack somebody's account or something of that sort? नहीं, एक तो ये गैर कानूनी है और बिल्कुल भी मुझे ये सब करने नहीं आता। ये और जो कर रहे हैं अनऑफिशियली प्लीज वो भी ना करें, है ना। तो मुझे तो बिल्कुल ये सब चीजें नहीं आता, मुझे सिर्फ वही आता है जो स्क्रिप्ट में है और स्क्रिप्ट में कहा गया था करने के लिए। तो एक एक्टर को आई थिंक इतना काफी होता है सीन के लिए कि जो स्क्रिप्ट में है वो कर दो। हालांकि सच पूछो तो ऑफ द रिकॉर्ड मैं चाहता भी हूँ ये सब आ जाए। देखता हूँ कोई मुझे सिखा दे, बता दे कैसे होता है। और हाँ, तो मुझे अभी तक तो मुझे बिल्कुल नहीं आता कि कैसे किया जाता है। बस यही सवाल था आपका। Sure, but tell me about the character ना, आपके कैरेक्टर के बारे में और थोड़ा सा बताइए without giving any spoiler. तो जितना मुझे बताया गया है कि आपको इतना ही बोलना है, मैं उतना ही बोलूंगा। मुझे ये कहा गया है कि आप ये बोलना कि ये एक स्मॉल टाउन हैकर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हैक करता है चीजों को और बहुत स्मार्टली हैंडल करता है, लेकिन ये बाकी हैकर्स की तरह स्मार्ट नहीं दिखता। ये अपने रूट्स को लेकर के आया है इस सीरीज में, जो जैसे आप देखते हो स्मॉल टाउन के लड़के को यहाँ से पूरा भरा होता है, बहुत टैलेंटेड होता है, उसको देख के नहीं लगता कि यार ये बंदा इतना स्मार्ट होगा, बट उसके काम बोलते हैं, उसके एक्शन बोलते हैं। तो ये कैरेक्टर उसी तरह का है, दिखने में बड़ा सिंपल सोबर सादा सा इंसान और काम बहुत गंभीर कर रहा है। ये ऐसा फाइटर है जो पर्दे के पीछे है, पर्दे के आगे रेजिना लड़ रही है, पर्दे के पीछे मैं लड़ रहा हूँ और बाकी सब फाइटर्स हैं इसमें, तो मैं भी उनमें से एक हूँ।
बहुत मजेदार है, मजा आएगा। शो करते हुए भी मुझे मजा आया है, और अभी तक हम्म। जितना देखा हूँ देखते हुए भी मजा आया है। पूछना चाहूंगी कि जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो ना, मुझे जहां तक मुझे लाइक वट एवर आई एम रीडिंग फ्रॉम द ट्रेलर, इट लुक्स लाइक समवेयर वो जो बैलेंस करना होता है ना बिटवीन द फैमिली लाइफ एंड द प्रोफेशनल लाइफ, you are somewhere coming in between and trying to tell her that the importance of both the things. And that's all that I'm reading from the trailer. But give us a little more insight of that. That's actually right. Like what I think Mera wala jo part hai, that's absolutely opposite to the theme of the show. Like it's essentially an action thriller, cop drama kind of a thing. But ours is the family portion jitna bhi hai. And you see this guy trying to instill in the wife's head the fact that how families more, if you want to say that, more important that they have a child together, the child needs to be taken care of. So Sameer is kind of trying to figure out the balance of life for Kavya. At the same time, it's also a good lesson on parenting, how different parents think differently. Quite interesting. Yeah. Quite interesting. Finding the balance is tough, but I think it is more difficult for a woman because this is what I have. This is what I have heard from most of the working mummy, that there is always a guilt factor that is working behind our back. That whatever it is, but it never happens to a father. A father is always a working father. If the mother is a working mother, then there is always a sense of guilt that's just there. No matter how much they try to balance it. As a man, what do you think, Barun, on that? I think there's a few stupid fundamentals the society was based on. We were not a very progressive country always, is what I felt. Even if the women that are working now, even if there was any competition, I don't think there is any. But if a woman has a child and is a part of the family and has to work for a living, there is no way a man can even compete. The same family, I'm saying, the man can compete with the amount of what the woman does for the family. But our understanding is the men are meant to be the primary breadwinners only. So that actually does a disservice to the men and to the women of the country. एक ही काम है, आदमी खाली पैसा कमाएगा, लड़की खाली घर संभालेगी. That's very stupid. Different families are different. So yeah, shows like these are hopefully it's a great thing that we're gonna get insight into how the defense services of the country work, but it's also a very progressive relationship in that sense. I hope people take away something good from it. It looks like it is looking like a playground for a talented actor like you, because you got a chance to do action, there are drama, there are like so much to do in this character, right? What was the preparation like? What was the preparation like for you? The prep was pretty good in the sense, for me, right from the beginning, since this is the first time I'm playing an IPS officer, and it is based on on the lives of certain IPS officers, female IPS officers. I wanted to understand where the writers had come from. So I wanted the material that the writers were also using to write their script. That was one. In terms of action and everything, in general, I'm a very active person, but that doesn't mean to say I would get action easily also. I just like action quite a bit. I have done a couple of action films, and it's something that my body finds ease with. So there wasn't too much I had to do, but we do have some intense action scenes in the show that I'm looking forward to seeing how they've come out. So yeah, in terms of prep, that's what it is. But I would also like to touch upon that question you asked, Barun, although I know it's not for me. In terms of shame and guilt, when there is a huge difference in, and I speak only for the Indian society that I've grown up in, the culture. It is a part of the culture for the man to, be the breadwinner and the woman to take care of the family.
but in India, the women also, since especially in the lower socioeconomic strata, the women have to work. Right. Sometimes there's no choice. Yes, absolutely, and I know that. Yes. Yeah, and maybe or maybe not, there is guilt over there, but there's also the certain strata of the society where women choose to work, Yeah. and I feel like Yeah. the moment it becomes a choice for the woman, People are then right to there's point fingers. the dynamics are so different, and that's what happens over here as well in the show. This lady chooses to do this and is trying to make everyone around her understand that she is trying to balance the two. Now, is she going to come out a hero or not a hero? I mean, that's only left for you to see through her life. But that is the thing that we also trying to touch upon. Like why is it that when a woman makes a choice to do something, it's guilt-ridden? चंदन जी, आपसे भी ये पूछना चाहूंगे कि in this whole story, like in this whole series, ठीक है ना, जिस तरीके से एक एक कैरेक्टर जितना इम्पोर्टेंट है, इट इज लुकिंग लाइक मतलब एक जिक्सो पजल है जिसमें एक एक कैरेक्टर इक्वली इम्पोर्टेंट है ना, और आज के डेट में सीरीज ही होता है ऐसा जिसमें एक एक कैरेक्टर को इतना तवज्जो दिया जाता है। आपने इससे पहले भी बहुत अच्छे शोज में आ चुके हो, तो आप इस पूरी चीज को कैसे देखते हो? मेरे गुरु हैं रघुवीर यादव, तो वो हमेशा कहा करते थे और कहा करते हैं कि 90s के अर्ली सालों में कुछ ऐसा था कि मुंबई में ना हर कोई उसको क्या बोलते हैं, टकला होकर के घूमना। हाँ, तो वो टकला होकर के मुंबई में घूमता था। क्यों? क्योंकि उस समय ना टीवी सीरियल का एक बाढ़ सा आ गया था, है ना। हर कोई जो थिएटर करके आ रहा था या फिर जो गुणी एक्टर थे वो सब खप जाते थे। आज ओटीटी आने के बाद फिर से वो दौर आ चुका है कि अगर आप छोटे शहर से ही हो या कहीं से भी हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर हुनर है, चाहे वो राइटर हो, एक्टर हो या इस मीडिया फील्ड से किसी भी चीज से आप रिलेटेड हो, आपके लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो ये सिर्फ ओटीटी की वजह से है, वरना अगर फिल्म वगैरह में क्या था कि नो डाउट कुछ लोगों के हाथ में वर्चस्व था जो अब बट रहा है। आजकल लोग अपने फोन से भी बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो ये चीजें और वो हिट हो रहा है, वो चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब चीजें बट गई हैं। इसका फायदा हम जैसे नए लोगों को मिल रहा है जो पहले मेहनत करते थे लेकिन वो पहुंच नहीं पाते थे। आज मेहनत कर रहे हैं तो दरवाजे भी खुले हुए हैं, कई सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप जाओ तो ईमानदारी से खुद को दिखाओ तो अवसर मिलेगा। साथ में एक चीज मैंने नोटिस किया, आप जब भी जवाब दे रहे हो ना, एक बार बहुत बड़ी मेंशन किया आपने, और वो ये है कि स्मॉल टाउन से है अगर आप, तो या स्मॉल टाउन के जो लोग हैं या स्मॉल टाउन से आते हुए जो टैलेंट है ना, ये आपने जिक्र किया। तो क्या होता है कई दफा जब आप लोग ऑडिशन देने जाते हो, तो उस टाइम पे आपको कैटेगराइज किया जाता है कि बेटा स्मॉल टाउन का लड़के का जब किरदार आए ना तो तब आप ऑडिशन में आओ, या तब स्टीरियोटाइप होता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या ये हाँ, कई बार ये ऑडिशन में मेंशन होता है कि मुझे इस तरह का कैरेक्टर चाहिए, और तो जहाँ जो इस कैटेगरी में आते हैं वो लोग बड़ा कॉन्फिडेंट होके जाते हैं। लेकिन अभी मेरे साथ चीजें बदल गई हैं। लोग ये नहीं देखते कि ये कहाँ से है, नहीं है, बस ये देखते हैं कि इसने क्या किया है, क्या ये मतलब ठीक है मेरे कैरेक्टर जो मैं चाह रहा हूँ, जो स्क्रिप्ट मेरे पास है उसमें ये लड़का फिट आ रहा है। नहीं भी हो रहा तो मेरे से ऑडिशन लेते हैं। और कई जगह मैंने बड़े अच्छे भी कैरेक्टर किए हैं, उसमें ये सब जो एक आपने कहा ना ये चीजें मेंशन होती हैं, वो अब मेरे लिए मायने नहीं रखती। लोग मुझ पे चांस ले रहे हैं, उनको लगता है कि ये कर सकता है, और नो डाउट मैंने वो किया भी है, देखा जाता है। और ये मतलब मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक एक्टर है, वो एक्टर कुछ भी कर सकता है, तभी तो वो एक्टर है। आप उसको क्यों नहीं, ये गांव का तो गांव दो, छोटे शहर का छोटे, नहीं यार वो कुछ भी कर सकता है, आप उस पर ट्रस्ट तो करो। वो कुछ नहीं करेगा, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब एक्टर ही नहीं है। हमारा तो काम ही है एक्टिंग करना बाबा।
है ना? तो आप कुछ भी दोगे मैं कर लूंगा, बट आपको ट्रस्ट करना होगा और मुझे ईमानदार रहना होगा, है ना, अपने काम के लिए। क्या बोलती हैं अरुंधति? बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम बहुत अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल। अरुंधति, अरुंधति या Thank you. I'm very excited about the show. जब ये कैरेक्टर आप लोगों के पास आया, आप लोग कितना एक्साइटेड थे? पहले मैं ही जवाब देता हूँ। तो ऐसा है कि एक तो मतलब थोड़ा सा हट के मैं जवाब मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे लगता है ना कि मेरे को ना यार सूट चाहिए, मेरे को कैमरा चाहिए। मतलब हर दिन कॉल टाइम आए, हर दिन मेकअप हो, कैमरा चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए मुझे। तो जैसे ही जब काम आता है तो पहले तो मैं ये देखता हूँ, चलो फिर से इतने दिन मेरे लॉक हैं और मुझे रोज शूट पे जाना है, तो ये पहला मेरे दिमाग में थॉट आता है। दूसरा ये कि कहानी कैसी है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कहानी जब इन्होंने मुझे कही तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा अलग है, हैकर है, और जिस तरह से इन्होंने मुझे सुनाया था तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, और कि हम आपको सेट पे ही लगा करेंगे। कि हैकिंग कैसे करते हैं सीखने को मिलेगा? हाँ ये सब मतलब नो डाउट इसमें बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, बट अभी तक मैं हैक नहीं कर पा रहा हूँ, और ठीक ही है, मैं कर पा रहा हूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि ये गलत चीज ही है, मतलब तो अच्छा है, मेरे को नहीं आता है। खैर, तो बहुत सारी चीजें मुझे लगा कि यार इसमें एक बतौर अभिनेता कुछ करने को मिलेगा, एक्साइटिंग रहेगा। और कई बार जब आप सेट पे जाते हो, नए लोग होते हैं, सब कुछ नया, डायरेक्टर नया, को एक्टर नया, सेट, तो सब दिन कुछ नया होता है, हर दिन नया होता है, हर दिन चैलेंजिंग होता है। आप बहुत ही एनर्जेटिक होके जाते हो, तो ये सब चीजें थी, इसीलिए मैंने कहा चलो करते हैं। कैरेक्टर भी सही था, मजा आ रहा था, और पहली बार कोई ऐसा कैरेक्टर था जो हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। आर्मी में जाना चाहते थे बचपन से, वो हुआ नहीं, लेकिन हम कैमरे पे देश के लिए कुछ करें, कुछ ऐसा था तो किया गया। The show when the show was offered to you? Yeah, okay. I definitely was absolutely excited because this was for me in my OTT career sort of like the next step, to have a show mounted on my shoulders and to have to be able to pull it off. It's a little bit of a scary thought, but if I put the fear out, then it just does make a lot of sense for me to do something like this, especially because it's action packed, and this show for me is very different compared to all the other shows I've done. I play a classical dancer on Rocket Boys. I play an Air Force pilot in Shoes, but I don't have that action per se. Yeah. So now to just bring on a different avatar itself for me was beautiful, and to be offered like this for me is like a full meals. Like I could sit and just pour myself into it, which is what we did for 3 months. So definitely was very excited to take on Jaanbaaz. Usually I'm very excited to get onto new projects because I get to meet new people, learn new things. So yeah, I was really excited. You get to meet so many people. Yeah. Also wanted to see how Srijit Mukherji directs. Hey. Yeah. But the reason for that is it was too many things. What is so special about Barun? What is so special about Srijit's direction? What's the what? So what is so special What is so about special direction? No. It was about not about Srijit's what. direction? No. It was, of course, he's done some great stuff, but I was not talking about that. When I read a little bit of what I read, it was too much. There was way too much action. There were way too many cities to shoot, and so just to keep your head together. Like Chandan was saying, the interviews that he has the edit in his head when it's going on. So technically he's really good, but I really wanted to see whoever takes on this show, how is that person going to handle it. I think she did a very good job. He was level-headed. He was technically very good. Let's see how it's come out now. I don't know.